So starting a Pomodoro of 58 to 60 minutes. I'll try to complete this F1 chapter in maximum 1 hour. ज़्यादा रीड नहीं किया इसको, but still let's see how it goes. So question number 1. Way Limited provides the following details September for computation of refund claim under Rule 89.4. 89.4 is zero rated supply of goods के केस में. Okay. Compute the eligible claim under the said rule, assuming that the conditions are fulfilled. Opening balance of ITC availed during the period, zero rated supply made during the period 5 lakh, supply of goods other than zero rated supply. तो टोटल सप्लाई 8 लाख का हो गया, उसमें से 5 लाख का जो है ITC ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें तो टैक्स ही पे नहीं किया है. ओके, तो 5 लाख का जो आएगा अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल, like 5 lakh plus 20 lakh ka, that we will take as ITC. So देख लेते हैं 89.4 के अंदर रिफंड अमाउंट इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी, refund amount should be 25 lakh into 5 lakh. नहीं, this is 5 crores, so 500 lakh divided by, this is, okay, this is 8 crores, okay, 800 lakh, which is equals to 25 lakh into 5 divided by 8, that is 1562,500, 15,62,500. बट यहाँ पर आंसर आ रहा है 12,50,000, मुझसे गलत है. तो इसमें एज पर 89.4, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है जब अंडर बॉन्ड और एलिजिबिलिटी होता है, रिफंड ऑफ ITC इज ग्रांटेड एज पर फॉलोइंग फॉर्मूला. ये रॉन्ग है. एज पर 89.4 of GST rules 2017, in case of zero rated supply of goods without tax payment under bond or LUT, refund of ITC with formula, refund amount is equals to turnover of zero rated supply, वो हमने भी लिया था. जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर 5 crores था. जीरो रेटेड सप्लाई प्लस, अच्छा, ऑफ गुड्स का यहाँ पर, और टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनटू नेट ITC डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आएगा. एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ओके. टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, तो वी नो इट्स 500 lakh, बट यहाँ पर नेट ITC लिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC और ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ITC अवेल्ड मतलब 20 लाख को लिया हुआ है नेट ITC में, एंड एडजस्टेड ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC ना, ओके, ड्यूरिंग द पीरियड वाले का ही ITC होगा, मे बी, आई डोंट नो. ठीक है. एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इज इक्वल्स टू, ये तो वही है, 800 lakh, 500 lakh प्लस 300 lakh. ठीक है.
बस ये 20 लाख का ही फर्क आएगा. Therefore maximum refund is equals to rule 89.4 में rule 89.4 में 20 lakh into 500 lakh divided by 800 lakh, which is equals to divided by 25 lakh कर देते हैं into 20 lakh 125 12,50,000 आ गया अमाउंट. ओके, एक बार जरा देखो यहाँ पर रिलेटेड सप्लाई में नेट सप्लाई वो क्यों डाला है. अंडरस्टैंडिंग हाउ रिफंड ऑफ IGST is related. परचेज बाय मिस्टर ए, एक्सपोर्ट किया 18,000 का IGST, पेड टू ऑन इनपुट 9,000, पेड ऑन आउटपुट दैट इज 18 minus 9 is 9,000 after utilizing ITC. Okay, total tax paid is 18,000. Burden should be 0 for promoting export. ठीक है, तो refund due is 18,000. टोटल एक्सपोर्ट का जो रिफंड है वो. ठीक है, रिफंड ऑफ फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट गवर्नमेंट वांट्स टू कीप 0 टैक्स. रिफंड ऑफ टोटल टैक्स पेड दैट इज IGST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई. ओके, देन यहाँ पर रिफंड का अमाउंट है केस ऑफ ओके एक्सपोर्ट ऑफ रिफंड ऑफ IGST ऑन जीरो रेटेड सप्लाई. अच्छा, यहाँ पर तो IGST पेड वाला केस है. नो नीड टू फाइल सेपरेट refund application, shipping bill or export shall be considered refund application. In case of additional refund due upward revision of price of goods after export, exporter may file application for refund of additional IGST paid. File export of services के लिए यहाँ पर है supply to SEC units or developer. ये रहा normally ITC. Refund of accumulated ITC on zero rated supply under bond or LUT without payment of IGST. ये 89.4 है अपना. Refund of unutilized or accumulated ITC 89.4 है. 89.5 89.5 क्या है. This is all zero rated 89.5 है. Refund of accumulated okay inverted duty structure वाला 89.5 है. ये 89.4 है. इसके अंदर परचेज बाय इतना जीरो टैक्स पे किया था 9,000 एक्स्ट्रा पे किया हुआ है तो 9,000 रिफंड ऑफ टोटल टैक्स पेड दैट इज एक्यूमुलेटेड. अ पर्सन जीरो टैक्स सप्लाई as well as other than zero tax supply but refund of accumulated ITC. Okay, a person may involve in zero tax supply as well as other supply. Okay, is available only for zero tax supply. So refund amount shall be computed as per following. Turnover of zero rated goods, zero rated adjusted turnover or net ITC. Net ITC का मतलब है ITC availed during the period और inputs and input services during the period है. यहाँ पर opening नहीं है. ITC availed on capital goods सिर्फ inputs और input services का, capital goods का नहीं include होगा. Block credit shall not be included. Ignore opening and closing balance. ITC on input services used for exempt supplies is not included in net ITC. However, if exempt supplies are made as zero rated supply, then it is to be included in net ITC. If person making zero rated supply is claiming refund on ITC on deemed export made to him, then such ITC shall not be included in net ITC. Making zero rated supply is claiming refund of ITC on deemed export made to him, then such ITC shall not be included. What does this mean? Okay, तो यहाँ पर turnover लेंगे shall be lower of following tax invoice value of zero rated supply of goods
made during the period. Tax invoice, assessable value, FOB of 0-day supply of goods made during the period. Tax invoice value, FOB value इसमें से lower लेना है. 1.5 times the value of like goods domestically supplied by same or similar supplier. If exempt supply is made as zero-rated supply, then such goods are considered for calculating turnover of zero-rated goods. Export duty is levied on zero-rated supply, then such goods are not considered for calculating turnover. Export duty is levied on zero-rated supply of goods, then such goods, जिस पे export duty लगा है वो नहीं लेना है. Then such goods are not considered for calculating turnover of zero-rated goods. Services में aggregate payment received during the period towards zero-rated supply minus advance payment received during the period. Services yet to be made. Zero-rated supply made during the period for which payment is already received earlier. Made during the period. Okay, यहाँ पे services yet to be made है वो वाला, और इसके अंदर ऐड कर देंगे जिसके लिए एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है. If exempt supply of services made as zero-rated supply, then such services are considered for calculating. Okay, अब adjusted total turnover देख लेते हैं. Adjusted total turnover is equals to turnover of zero-rated supply of goods. Okay, this is turnover of zero-rated supply of services. Turnover of zero-rated supply on which export duty is levied. Okay, यहाँ पर total में आएगा. और other than zero-rated supply, excluding exempt supplies को exclude करना है. Okay, now let's see. ये मास्टर क्वेश्चन है, ये बाद में देखते हुए एक बार पहले कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, 89.4. इसलिए हमने इसके अंदर 5 लाख नहीं लिया बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग को एलिमिनेट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 2. भगवान मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स कंपनी is registered under GST in the state of Rajasthan and supplies various goods in domestic as well as international market. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. It exports goods without payment of tax under bond in accordance with section 63. Without. Okay, ये zero rated supply ही हो गया. Goods without payment of export goods है ना, or letter of undertaking provisions of section 63. BMEC provides following in relation to supplies made by it during October 2024. Taxable value of goods star supplied within India. यहाँ पर goods का नाम star है maybe. Okay. Taxable value of goods star supplied within India. Taxable value of goods sun exported without payment of tax under, however, without payment of tax. Taxable value of such goods supplies domestically. अच्छा, इसका 1.5 times ले लो या फिर 6 लाख का 1.5 times होता है 9 लाख. लोअर लेना है ना 9 लाख और 10 लाख. I think 9 lakh लेंगे इसमें. Taxable value of goods moon exported without payment of tax under bond. Such good when supplied domestically 1,50,000. इसका भी 1,50,000 into 1.5 2,25,000. 2,25,000 1.5 times जब करते हैं तो यहाँ से अपना आ जाएगा turnover of zero-rated supply of goods. फिर ITC कितना अवेल किया है. ITC availed on capital goods तो नहीं मिलता है, availed on inputs and input services मिल जाता है for the above tax period के लिए. ठीक है, all above inputs or input services and capital goods are used in manufacturing as well as all conditions for availing ITC has been complied with. Balance in credit ledger at the time of filing the return
Refund application is 1,50,000. Balance से हमें कुछ नहीं करना है. The credit ledger at the end of October 2024 which refund is claimed for a set period has been filed as it now. इसका भी कुछ नहीं करना है. Guess इन दोनों का ही कुछ नहीं करना है. हाँ, you are required to compute the amount refundable against accumulated unutilized ITC tax period according to provisions of GST law. So according to me, 89.4 for zero rated supply of goods or services refund amount is equals to turnover of zero rated supply of goods plus turnover of zero rated supply of service divided by adjusted total turnover multiplied by net ITC. ओके, तो यहाँ पर नेट ITC आ जाता है is equals to 3 lakh plus 1,50,000, that is 4,50,000, and the turnover of zero rated supply of goods जिसमें अपने पास है सन के लिए we have 10 lakh or 1.5 times of 6 lakh, lower of that is 9 lakh. Moon के लिए we have lower of 2 lakh or 1.5 times of 1,50,000 which is equals to 2 lakh. What is 2 lakh? Total turnover is equals to 11 lakh. Adjusted total turnover is 11 lakh plus goods supplied within India 14 lakh. This is 25 lakh. So the fund is equals to 4,50,000 into 11 lakh divided by 25 lakh. 4,50,000 into divided by 25 is equals to 1,98,000. ओके, सो आंसर भी यही है जो मुझे दिख गया यहाँ पर. ठीक है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर. अब यहाँ पर फॉर्मूला फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पर भी लिख देंगे रिफंड ऑफ ITC इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और LUT इज एज फॉलोज. टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज just a total turnover net ITC 2 lakh plus में 14 lakh. ठीक है, turnover of goods lower of this or this, lower of this and this. Refundable amount is the least of following. अच्छा, यहाँ पर इसमें भी least आएगा, ये चीज न्यू है. यहाँ पर refundable amount is least of following. Number 1, refund per rule 89.4, that is 1,98,000. The balance at time of filing refund application. Balance at time of filing refund application. Okay, 1,50,000. See, balance
credit ledger, in credit ledger at end of October, for which ओके ये वाला तो मैक्सिमम रिफंड है ना, तो इनसे कंपेयर तो होगा ही ना, तो यूटिलाइज कर लिया उसका रिफंड थोड़ी ना देंगे अब। ओके, बैलेंस एट द एंड ऑफ अक्टूबर फॉर विच refund is being filed after return in form GST 3B has been filed, और रिटर्न फाइल हो गया है 3,25,000. Therefore, refundable amount is 1,50,000. Note: no refund on capital goods eligible. ठीक है. Now question number 3. Sinotax Private Limited taxable goods Q and exempt goods S, और प्रोडक्ट S जो है, Q जो है टैक्सेबल है, S exempt है, S जो है सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. ओके, जो अपना S है वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है. Company under GST in the state of Maharashtra provides following information made during the taxable product S. S कौन सा है अपना? S जो है exempt है, Q taxable है, okay, has been exported to UK for 12,000 pounds. Q has been supplied within India, ये तो within India ही है. Supplies made मतलब turnover में जाएगा. Above amounts are exclusive of taxes wherever applicable. Information: tax paid on inward supplies received, has been paid on inputs, has been paid on capital goods का नहीं मिलेगा, on input services are used in manufacturing process. ठीक है. Following additional information, compute the amount refundable. सबसे पहले refundable amount निकालना है. Question number 3 we have. Let's see if सारे इतने बड़े questions है क्या. तो जीरो रेटेड सप्लाई है, अभी तो इन्वर्टेड वाला बच्चा है, यहाँ से इन्वर्टेड है, सारे क्वेश्चंस इन्वर्टेड के ही हैं. ये तो छोटा सा टॉपिक है. इन्वर्टेड अगर कंप्लीट हो गया तो आई गेस हो जाएगा. बट देन क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टू फाइंड रिफंड. तो एस वाले का आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस इन इंडियन रुपीज इज 12 लाख. ओके, इंडियन रुपीज की वैल्यू है, उससे भी कंपेयर करना है. ओके, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड इन इंडियन रुपीज. ओके, 12 लाख इन्होंने दे दिया है, और सच प्रोडक्ट व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली, तो इसका 1.5 टाइम्स और 12 लाख, तीन चीज़ों से कंपेयर होता है ना. 1.5 टाइम्स 12 लाख एंड 1.5 टाइम्स, हाँ, एंड असेसेबल वैल्यू FOB ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्स इनवॉइस वैल्यू या फिर असेसेबल वैल्यू. असेसेबल वैल्यू तो यही है अपना ना, टैक्स इनवॉइस वैल्यू भी यही. ओके, मैं यहाँ पर बेटी
is a 100% export-oriented undertaking. It has claimed ITC on goods supplied to it by Sinotex. हमारी कौन सी कंपनी? हमारी तो सिनोटेक्स है. बेटी क्या कर रहा है यहाँ पर? I have lost the plot. Where is Betty? Company provides ITC on goods supplied to it by Sinotex. Balance in e-credit ledger और Sinotex. इसका क्या यूज है? बेटी मैंने पहले भी रीड तो किया था. हाँ, प्रोडक्ट Q हैज बीन सप्लाइड टू बेटी एंटरप्राइजेस विद इन इंडिया. Q जो है हमारा टैक्सेबल है, बट बेटी एंटरप्राइजेस जो है वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो ये क्लेम कर रहा है हमसे ITC. कर लो यार. उसमें हमें क्या, हमें तो अपना निकालना है ना. रिफंडेबल टू सिनोटेक्स. Balance in e-credit ledger at the end of tax period for which the GST 3B has been filed is 5,80,000. In the e-credit ledger at the time of filing refund, इन तीनों में से 89,400 को 5,80,000 और 3 लाख से कंपेयर करना है. अब यहाँ पर नेट ITC इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 2 लाख. मेरे अकॉर्डिंग ये है, बट आई थिंक ये बेटी वाला कुछ केस हो सकता है, बट ठीक है. Of a turnover of zero rated supply of goods is equals to 12 lakh or 1.5 times of 10 lakh. 1.5 is 15 lakh. That is lower, which is equals to 12 lakh. ठीक है. और टोटल टर्नओवर में we have 12 lakh plus 20 lakh from sales to Betty. This is 32 lakh. Refund 7 lakh into 12 divided by 32. 7 lakh into 12 divided by 32 is equals to 262500. हाँ यही है. यहाँ पर भी आई गेस सही सोचा है मैंने. उनका कुछ नहीं होगा. अब 89,400 का रिफंड है ये. अब ये तो मैक्सिमम रिफंड है, और अमाउंट टू बी रिफंडेड is least of number A 2,62,500, B at the end, that is 5,80,000, GST 3B at the end of the tax period for which refund is claimed, and GST 3B is filed, और यहाँ पर 3 lakh. Lower is equals to 2,62,500. ठीक है. अब यहाँ पर let us quickly read. Export of कहानियाँ लिखनी पड़ेगी. देखते हैं कैसे है इसके अंदर. This is a zero rated supply in terms of 16(1). Okay, export of goods is a zero rated supply. GST stipulates that subject to provisions of section 17(5), ITC may be availed for making zero rated supply even if such supply may be an exempt supply. हाँ, ये हमने शायद पढ़ा था कि फिर चाहे वो गुड्स एग्जेम्प्ट हो या कुछ भी हो, इवन इट सच सप्लाई में भी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए तो हमें वैसे भी मिलता है. A registered person can claim refund of any unutilized ITC at the end of any tax period. ये सिर्फ unutilized ITC के लिए है.
tax period in the case of zero rated supply made without payment of tax. Therefore, Sinotax will be eligible for ITC for export of product S, and thus will be liable to claim refund of unutilized ITC. ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज अ जीरो रेटेड सप्लाई. फर्स्ट थिंग ये बोला, एंड सेकेंड, even on exempt supply of goods, ITC is available. Number 3, registered person may claim refund of any unutilized ITC at the end of any tax period in case of zero return supply made without payment of tax. Therefore, in the given case, eligible for ITC and thus will be eligible to claim refund. Will be eligible claim ITC. Okay, because वो eligible to claim ITC है, eligible to claim refund है. As per rule 89(4), formula 7 lakh is net ITC, includes on input but not capital goods. Turnover of zero rated supply is 12 lakh, lower of the value of light goods. Adjusted total turnover is this, refund amount is this. Refundable amount refundable to the applicant is least of following. ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये we have to see क्या सीन है. Supply of product R QR. Where is R? R का तो मैंने कुछ देखा ही नहीं. Exempt good S है. Betty Enterprises, it has claimed. Where is R? Product R to Betty Enterprises. 100% EOU. Supplies to EOU is notified as deemed export under section 147. In respect of supplies regarded as deemed export, the application of refund can be filed by supplier of deemed export supplies only in cases where the recipient does not avail ITC. Good supplied to it by Sinotax. ये बेटी एंटरप्राइजेस अलग है क्या यहाँ पर? अच्छा, ये अच्छा, हमने 20 लाख वाले को वैसे भी टर्नओवर में नहीं लिया है, ठीक है. अब ये वाला, दिस इज इम्पोर्टेंट. Supplies to EOU is notified as deemed export. Application of refund can be filed by supplier of deemed export supplies where the recipient does not avail ITC and furnishes an undertaking to the effect that supplier may claim refund. Therefore, since Betty Enterprises is claiming ITC, Snowtech Private Limited cannot claim refund of ITC. Therefore, amount refundable is 2,62,500. Okay. तो यहाँ पर बिकॉज उन्होंने रेसिपिएंट अवेल कर लिया है ITC. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है, स्टिल क्वेश्चन नंबर 4. आई थिंक ये स्लो वाला सीन चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 तक. Question number 10 तक, it is difficult till 4th. Following particulars are furnished by Delight, which is duly registered entity, has also filed LUT in order to export goods without payment of taxes. Calculate refund amount in respect of ITC on inputs and input services. Okay, अब turnover यहाँ पर ये zero rated supply with LUT or bond. 89 rule 89(4) refund amount
Turnover excluding supply of services but includes domestic exempt supplies 8 lakh and inward supplies of 2 lakh. Zero rated supply 6 lakh. Export services अंडर बॉन्ड रॉयल्टी वाला तो अपन को लेना नहीं है इसके अंदर. अच्छा हाँ, अंडर बॉन्ड रॉयल्टी तो लेना है. एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज, एक गुड्स है, सर्विसेज है. नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, पेमेंट्स रिसीव टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड्स 12 लाख अगेंस्ट विच. अच्छा, अब यहाँ पे सर्विसेज के लिए एडजस्टमेंट करना है. एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर एडवांस रिसीव्ड एंड पास्ट अगेंस्ट विद विच इंक्लूड 12 लाख अगेंस्ट विच सर्विसेज, और ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला अगेंस्ट विच जीरो रेटेड सप्लाई हैव बीन मेड ये प्लस हो जाएगा. ऑन आईटीसी ड्यूरिंग द, अब यहाँ पर अपना नेट टैक्स आ जाएगा 9,60,000 मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई आ गया. एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर बॉन्ड और एलयूटी ये आ जाएगा 6 लाख प्लस यहाँ पर 48 लाख में से पेमेंट रिसीव टुवर्ड्स विच इंक्लूड्स 12 zero rated supply of services which includes इसमें से 12 लाख माइनस प्लस 14 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर आ जाएगा. तो इनको ऐड करना है अब यहाँ पर. ये कितना है, 6 लाख प्लस 48 लाख माइनस 12 लाख प्लस 14 लाख, दिस इज 56 lakhs. तो यहाँ पर 56 लाख आ गया प्लस नॉन जीरो रेटेड सप्लाई 10 लाख. अब ऊपर यहाँ पर लिखा है टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बट इंक्लूड्स डोमेस्टिक एग्जाम्प्ट सप्लाईज ऑफ 8 लाख एंड इनवर्ड सप्लाईज ऑफ 2 लाख. ओ गॉड, टोटल टर्नओवर कैसे होगा? एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है इसके अंदर, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ये सिर्फ और सिर्फ. ओके, तो अब इसके अंदर 64 सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, तो ये है, इसमें 8 लाख वो है. इनवर्ड सप्लाईज ऑफ 2 लाख, इनवर्ड क्यों इंक्लूड करेंगे, प्लस 62 लाख. ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 56 plus 62 plus 10 is 128 divided by equals to into 56 into 9,60,000. 9,60,000, that is 4,20,000. Let's see the answer. डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, नेट आईटीसी तो अपना करेक्ट है. टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स भी करेक्ट है. सब सर्विसेज का 50 लाख आ रहा है. हाँ, तो मेरा भी 50 लाख ही आया, तभी तो 56 हुआ है. ओके, मैंने क्या किया है, मैंने 56 प्लस 6 नहीं किया है यहाँ पर, प्लस 6 लाख भी तो होगा. 48 प्लस 2 है ना, ये 50. हाँ 50 प्लस 56 हो गया. ठीक है ना, मेरा भी 50 लाख ही आया है, 56 लाख हो गया. एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड. ठीक है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो है वो कितना आया है, वो गलत आया है. टर्नओवर इन अ स्टेट एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जीरो नॉन जीरो रेटेड सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज जिन्होंने माइनस किया है, एग्जाम सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज. मैंने 8 लाख को इसमें ऐड किया है बट उन्होंने माइनस किया है. 56 लाख, 64 लाख में से 2 लाख गया, 62 लाख. ओके, 50 लाख अगेन और 10 लाख क्या है,
नॉन जीरो रेटेड सप्लाईज इज 10 लाख। तो मैंने तो लिया है। अच्छा मैं सॉरी क्या आई एम रीडिंग 62 लाख हो गया है, 50 लाख हो गया है और 10 लाख हो गया। ये 6 लाख का क्या सीन है? 6 लाख क्यों नहीं लिया? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ बट इंक्लूड्स। अच्छा 6 लाख ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया है बट अंडर बॉर्डर। अच्छा ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 50 लाख, 6 लाख ऑलरेडी, 64 लाख में होगा ही। Therefore टोटल टर्नओवर में अलग से नहीं लेंगे। ठीक है 4,20,000 है। अलग से नहीं लेंगे। हो गया -8 लाख किया है तो 8 लाख क्या था? हाँ बट इंक्लूड्स डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट सप्लाईज। डोमेस्टिक वाली आई थिंक क्यों नहीं लेंगे टोटल टर्नओवर में डोमेस्टिक एग्जेम्प्ट सप्लाईज? यहाँ पर लिखा तो है turnover of other than zero rated supplies excluding exempt supplies। ठीक है other than zero rated supplies excluding exempt supplies के -8 लाख भी कर देते हैं। 60 + 62 - 8 114 आ जाएगा। 114 इंटू 6 इंटू 9,60,000 कुछ भलदा से ही आ गया। ओके 9,60,000 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 114 471,579 which is the same। Non-zero rated supply of services, exempt supplies other than zero rated supplies ये माइनस करना। 3 चीजें हैं यहाँ पर। फर्स्ट तो टर्नओवर ऑफ zero rated supply goods, services goods on which export duty is levied और other than zero rated supply वाले ले लेंगे बट excluding exempt supplies। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 An international trade exhibition is going to be held in US. Ayat Niriyat Export House as participant intends to send 100 units by to USA. Is of the view activity of sending goods is a zero rated supply. ठीक है Tax advisor does not concur with its view. Examine whether the view of ANH has participated in it. Taxable goods manufactured by ठीक है assuming could not sell any goods at the exhibition and brings back entire 100 units। Okay this is something different। यहाँ पर एग्जीबिशन में लेके गए हैं तो इसको जीरो रेटेड जो आई थिंक वहाँ सेल हो जाएगा ना उसको जीरो रेटेड बोलेंगे। to India in Feb in August discuss the requirement to issue invoice if any in each of the above cases। I think 6 months का कुछ रहता है। यहाँ पर is going to be held in जनवरी में हेल्ड हो रहा है ठीक है तो जनवरी में लेकर जा रहा है बेसिकली वो। यहाँ पर डिस्प्ले के लिए है। In February would your answer be different if ANH sells an aggregate of 65 units
हाँ तो इसको बोल देंगे इन यूएसए एग्जीबिशन ऑन डिफरेंट डेट्स इन जनवरी एंड 35 यूनिट्स आर ब्रॉट बैक ऑन 31st जनवरी. 6 months हो गया ना. तो फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये आफ्टर 6 months है तो इसके लिए यस हो जाएगा. यस इनवॉइस देना पड़ेगा as if sales has been made. Tax advisor advises that export of 65 units and it shall apply for 65 units. Examine of the tax advisor. Okay. दो केसेस है. केस नंबर 1 is this and case number 1 is this. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको जीरो रेटेड सप्लाई ही नहीं बोलेंगे और अगर जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे पहले ये बताना है. एंड नेक्स्ट इज 65 यूनिट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा. तो क्वेश्चंस आंसर इज सो. ठीक है. EH that activity of sending goods out of India is not correct. Okay. As per section 7, for any activity or transaction to be considered supply, it must satisfy twin tests, namely for a consideration, in the course of furtherance of business. Consideration or in the course of furtherance of business. For a consideration by a person in the course of furtherance of business. ये एक्सपोर्ट हम मान रहे हैं इसको. यहाँ पर ऐसा सप्लाई. Consideration in the course of furtherance of business. ओके. बिजनेस के लिए तो वो चाह रही है बट यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है. बट जीरो कंसिडरेशन में अगर रिलेटेड पार्टी को देते हैं और फिर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेट होता है या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है या फिर प्रिंसिपल एजेंट का वो रहता है तभी होता है. Consideration and in the course of furtherance of business. For any activity or transaction to be considered as a supply to interest. Okay, the exemption to above activities, schedule 1, just stated supply when up without consideration. Okay, in schedule 1. Urgency. Okay. Without consideration for the IGST supply where it is clearly stated that it shall have same meaning as assigned to it in section 7. Zero rated supply following supplies of goods or both. Export of goods or services हो जाता है. Supply of goods or services or both ये होता है zero rated supply का definition यहाँ पर इन्होंने दे दिया है. To a SEZ developer or unit. Thus only such supplies which are either export or supply to SEZ or developer would qualify as zero rated supply. In view of our proposed regions, clarified that activity of sending or taking the goods out of India for exhibition or consignment basis for export promotion, except when such activity satisfies the test laid down in Schedule 1 of the Act, do not constitute supply as such activity does not fall within the scope of Section 7. Okay. Activity of sending or taking goods out of India. Do not सिर्फ बोल्ड वाला ही रीड कर रही हूँ. Activity of sending or taking the goods out of India do not constitute supply as the said activity as there is no consideration at the point of time. Since such activity is not a supply, the same cannot be considered as zero rated supply as per provisions contained in section 16 of the IGST Act.